हेलो, यस, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी कंफर्म है। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार कंफर्म करिएगा, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। जी नमस्ते, नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, एवरीबॉडी इज वेलकम, सबका स्वागत है, सभी का वेलकम है, सभी को नमस्ते है, सभी को जय श्री राम है, सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, राइट। First question is on your screen. No voice, no sound, no audio. That was nice, right? इसीलिए शायद माइक बंद भी किया था कि देखो आप लोग कितने अलर्ट हैं। जी एस खान, फिरोज, लकी, दिव्यांशी, अजय मिश्रा, नूरी, स्वाति, कृतिज्ञ त्रिपाठी, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। यस, नाउ कंफर्म, एंड इफ कंफर्म द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन, राइट। Lectures on Shakespeare were delivered by Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge was one of the romantic poets, one of the beginners of the romantic poets, and collaborated with William Wordsworth for the lyrical ballads. He delivered a series of lectures, around 100 lectures. He wrote little but he delivered more, right? Sometimes his lectures used to be extempo, और उस extempore lecture में he delivered lectures on William Shakespeare, and his lectures on Shakespeare were delivered by Samuel Taylor Coleridge between, you have to tell the year between two when the lectures were delivered. बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एंड मैनर दोनों कैटेगरी में आती है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से ही कॉमेडी ऑफ मैनर बनी है नूरी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से ही कॉमेडी ऑफ मैनर बनी है। राइट क्वेश्चन, अजय मिश्रा, सुकृति वाघमारे, दिव्यांशी, फिरोज, बीके जी, स्मार्ट सिटी अयोध्या, ज्योति। राइट आंसर टू द क्वेश्चन. How many of you have given the right answer? Maximum number of students are with option C, right? But right option is not C, but the right option is A. Right option is A, between 1808 and 1819. 1808 and 1819 में the lectures were delivered by Samuel Taylor Coleridge on William Shakespeare, right? William Shakespeare पे lectures were delivered between 1808 and 1819. Coleridge delivered something like hundreds of lectures, right? Hundred of lectures on literature, education, philosophy, and Shakespeare. All right, the first question का answer is A. जी, everybody please like the session and share the session. Thank you Julie for reminding me my golden sentence. Right, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फटाफट लोगों को इंटीमेट कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, so that they could come and join the class. Right, please launch your book. Definitely I have my book. अभी आपको एक बुक शो करता हूं, but that is out of print right now. Right, out of print that is, but very soon you will have that book in your hand. All right, now I come to the next question.
Next question, that is the question number 20, question number 2. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. What beautiful lines. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. What a beautiful, what a jabardast bonding between lover and beloved. The lover knows that the beloved is lying, and in spite of that he believes in her. उसके बावजूद भी भरोसा कर रहा है वो. Right? What does it mean? Right? The author of these lines is a staunch believer. Right? He knows that his beloved is lying, but he believes in the lie of his beloved. Who is the poet? Who is the author? It is Philip Sidney, or Edmund Spenser, or Christopher Marlowe, or William Shakespeare. Who made this comment? Right, in your BA, you would have read this sonnet. This sonnet was by William Shakespeare, and from that the lines have been derived, the lines have been taken. वहीं से lines ली गई हैं. Right, when my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she is lying. मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उसकी बात मान लेता हूं. Right, सुमेधा, नमस्ते. All right, so this was question number 2, and answer to the question number 2 is 4. Now question number 3. Question number 3 here is on your screen. Biographia Literaria was intended to be a short preface to a collection of poems. Biographia Literaria was not written as a book. In fact, it was written as a preface to a book. And what was the name of that anthology for which Samuel Taylor Coleridge started writing his Biographia Literaria? Initially, it was a preface, and later on it became a complete literary autobiography of Samuel Taylor Coleridge. Right, you have to tell the name of the poem. Christabel, Kubla Khan, Sibylline Leaves, or Conversation Poems. किसके लिए ये बनाया गया था? जी, नीरज, भावना, प्रियंका, फिरोज, श्रुतिका, स्वाति, बीके, धर्मपाल, स्मार्ट सिटी, अयोध्या. राइट, खतीजा रफी, दिव्यांशी पांडे, नूरी खान, and all of you have given what? Incorrect answer. Incorrect answer has been given by majority of the students. Majority of the students have given incorrect answer. The right answer to the question is Biographia Literaria was intended to be a short preface to a collection of poems, Sibylline Leaves. This one is the right answer. Right, you have heard a lot about Biographia Literaria. You have heard a lot about primary and secondary imagination. You have heard a lot about willing suspension of disbelief. You have heard a lot about Coleridge's poetic theory, but you didn't hear the name of the volume of poem for which it was written. It was intended to be a short preface to the poetic collection Sibylline Face. All right, Ji. Oh my God. Don't go to God. God is not accountable for our failure. God has made us. ईश्वर ने हमको बना दिया है. हमें हाथ दे दिया, आंखें दे दी, शरीर दे दिया, पैर दे दिया, दिमाग दे दिया, सब कुछ उसने दे दिया है. अरे अब हमारा काम है भाई, हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है काम करना, हमारा काम है अपना दिमाग चलाना. गॉड का थोड़ा ही ना काम है ना. God has done his duty. Now it's our duty
to do our work, to perform our work. All right, चलो next question पर आते हैं जी ज्योति. My right. It's my right. Question number 4. The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by. Notably किससे influenced थी poetry of Wordsworth and Coleridge? Yes, Priyanka, I told you in my lecture, I told you this fact in my video on Samuel Taylor Coleridge as a critic, and I hope you still remember, and if you don't remember then you must rewatch that video. दोबारा से आपको इसको देखना चाहिए. Next question, it's not an issue. जी अजय मिश्रा, बुशरा, शारिका, विजय लक्ष्मी, सोनू, कृतिकेश, अशोक, बीके सुगंधा, हेमलता, जूली, सारिका, फिरोज. Right, they are the students who have answered the question. जी अशोक मिश्रा, प्रतिमा, नीरज कुमार. The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by the French Revolution. French Revolution took place in 1789. Fall of Bastille, it is also said. Bastille was the name of a prison house. Fall of Bastille took place in 1789, and that fall of Bastille is called the French Revolution that took place in 1789 when Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge were in their teens. Younger age में थे, and William Wordsworth had visited France after the demolition of Bastille. That he had the first experience. In the initial phase of their career, Samuel Taylor Coleridge and Wordsworth were influenced from this moment. उससे influenced है, but बाद में क्या होता है? बाद में disillusionment टूटता है, भ्रम टूटता है, और वो इससे का इंस्पिरेशन छोड़ करके अपने नए इंस्पिरेशन पर आ जाते हैं. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. That is the question number 5. Who among the following developed the term strategic essentialism? One day I told you about the term essentialism, the meaning of essentialism, and now we have a different term that is called strategic essentialism. Who coined the term? You have to tell the answer, and then I will tell you the context, in which context the term strategic essentialism was coined. Ji Jaya, good evening. Edward Said, Homi Baba, Gayatri Chakravarti, Spivak, or Azaz Ahmed? Yes, you have searched the answer and now you are giving the right answer. Shabash, come on. Come on, come on. और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज डू शेयर. Please do share the channel. Please do like the channel and do answer the questions. हाँ, फार्मूला आपका काम कर जाएगा. सबसे बड़ा वाला ढूंढ के लगा दीजिए, है ना. ये भी एक फार्मूला है. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक is a post-colonial post-structuralist. Post-colonial post-structuralist है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, and she coined the term strategic essentialism. Right? Essentialism is maintained through a particular strategy. Right? Through a particular strategy. And Gayatri Chakravarti Spivak is a feminist as well. So she thinks that essentialism means fixed identity. Fixed identity means मेल को मेल और फीमेल को फीमेल ही रहने देना, जैसे कि ट्रेडिशन में होता आया है. राइट? देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, राइट, बिटवीन ओल्ड ट्रेडिशन and new tradition. That is essentialism, and it is kept with a strategy
that is strategic essentialism. All right. एसजेड तुम तो ऐसे पूछ रही हो हुडा को मेरे से कि लगता है कि हुडा मेरी इतनी खास है और आप नहीं हो। मेरे लिए तो ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, सब कोई बराबर है। अब कोई किसी दिन आता है, कोई किसी दिन नहीं आता है, किसी को कुछ काम होता है, कोई हो सकता है मुझसे गुस्सा आ गया हो, है ना। अब मैं किसको ढूंढूं कौन आया कौन नहीं आया। किसी को लाइक नहीं आया होगा हमारा चैनल, किसी को कुछ क्वेश्चंस पसंद नहीं आए होंगे तो वो लोग नहीं आते हैं, या कुछ इससे भी ज्यादा जरूरी काम होगा लाइफ में इसलिए नहीं आए होंगे, है ना। क्या किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शशि दुबे जी आ गई हैं। हु सेड दैट आई राइट इन मीटर because I am about to use a language different from that of prose. Different from that of prose. किसका स्टेटमेंट है कि आई राइट इन मीटर, मैं मीटर में लिखता हूं, बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज a language different from that of prose, because I want to use different language. That's why I write in meter. What is the right option? William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Jane Austen or P.B. Shelley? जी नजमा, प्रियंका, स्वाति, बीके, रीता, कविता, भावना, मीरा, जूली, प्रतिमा, कविता, गुड इवनिंग, Hemlata, Neha Singh. Wow, great. Great answers are coming. Great answers given by great scholars, great students. Everyone agrees with the option A. This statement was made by William Wordsworth. जी सबका आंसर सही है ना, सिर्फ 2 आंसर सही हैं, बाकी सबका गलत है। रोज पढ़ाता हूं और रोज भूलते हो, है ना। खूब पढ़ाता रहो, खूब भूलते रहो, और खूब वीडियो भी देखते रहो, खूब चैनल भी देखते रहो, और बाद में ये भी कहना कि मैं तो न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर के रोज क्वेश्चन भी सॉल्व करता था। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि there should be no difference between the language of prose and language of poetry. याद है कि नहीं। There should be no difference between the language of prose and language of poetry, and poet is a man speaking to men, means he was talking about simplicity, he was talking about simple language. And Wordsworth was of the opinion that meter is not necessary at all. It is up to the poet whether he wants to use the meter or he doesn't want to use the meter. And on this meter, on this pattern, on the meter, Coleridge differed from William Wordsworth. Coleridge always wrote in meter with the statement I write in meter. Wordsworth never says that he writes in meter. I write in meter because I am about to use a language different from that of prose. तो फर्स्ट आंसर जो प्राइमा फेसी आंसर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं होगा। प्राइमा फेसी आंसर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, as Wordsworth was in favor of the same language for prose as well as poetry. And this statement was made by Samuel Taylor Coleridge. ये सैमुअल टेलर कॉलरिज का स्टेटमेंट था, and he said that I write in meter because I want to make a difference between the language of poetry and the language of prose. All right, समझ आया कि नहीं? Any doubt, any confusion? Any doubt, any confusion? If you have any doubt, if any doubt persists, if there is any query, any inquiry, then just raise your hand, write your question, and then I will reply and then proceed. Just बताओ समझ आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? फाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का डिफरेंस क्लियर है।
जी लकी, लेट्स प्रोसीड। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो अगले बार क्या होगा? अच्छा, आप बोले ग्रेट स्कॉलर, तो एक बार तो मजा आ गया, लेकिन फिर पता चला कि सटायर था। ये सटायर नहीं, इसी को आयरनी बोला जाता है। फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, दैट इज कॉल्ड आयरनी। आयरनी मींस व्हेन यू वांट टू से समथिंग एल्स, और बोल दे तो उसका अपोजिट। जैसे कोई फेल हो गया हो और कह दो टॉप कर गए ना, इसको बोलते हैं आयरनी। बस मैंने बोला था आंसर गलत, और क्या बोला था? ग्रेट स्कॉलर। ये ग्रेट स्कॉलर जो है, दिस इज आयरनी, राइट। चलो प्रोसीड करते हैं ना जी। सारिका क्या लिख दी है आप? मेरे को पता नहीं चला। पीके बच गई, बाद में ज्वाइन कर रही हैं क्लास डांट खाने से, है ना। चलिए, अच्छा, सजाए मौत, अब कितनी बार मरोगे? हाँ, जूलियस सीजर बोलता है cowards die many times before their death but the valiant taste it once। बहादुर लोग जो होते हैं एक ही बार मरते हैं। cowards die many times। चलो नेक्स्ट, कॉलरेज पर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है। अरे जो वीडियो बनी है कॉलरेज पर उसको देखो मेरे भाई। कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ दोनों पे वीडियोस बनी है, और आप दोनों वीडियोस को देखिए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो नहीं देखते हो, मेरे वीडियो बनाने से होगा क्या जब आप देखते ही नहीं हो? मेरे वीडियो बनाने से क्या होने वाला है? once you don't have time to watch those videos, and it is a saying, maxim हो गया है, it's better to read a book 20 times than to read 20 books one time। थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, it's better to watch a video 20 times than 20 videos one time, that will lead to success, right। एक वीडियो 20 बार देखिए, you will get 20 new facts, right। वो मेरी वीडियो है, वो सबकी वीडियो नहीं है यूट्यूब या टीचर्स की, कोई कुछ भी बना दे उठ पटांग, राइट। आप देखिए यूट्यूब पर फैंसी एंड इमेजिनेशन डालोगे ना, 2 मिनट की वीडियो मिलेगी, 1.5 मिनट की वीडियो मिलेगी, 5 मिनट की वीडियो मिलेगी। मेरा पूरा लेक्चर है घंटे भर का उसी बायोग्राफी लिटरेरिया पर, उसको पढ़ो ना पहले, देखिए कितने सारे फैक्ट्स हैं वहां पे, देखो ना उस वीडियो को। इतने सिंपली तैयार नहीं होते वीडियो, मैं जानता हूं एक एक वीडियो में कितने दिन लगते हैं, कितने सोर्सेस का यूज करना पड़ता है, कितने पढ़ने पड़ते हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें डालने होते हैं, वो वही जान सकता है ना जो जाके यूनिवर्सिटी में, जो जाके कॉलेज में लेक्चर देता है। लेक्चर प्रिपेयर करना होता है बिफोर आई मेक अ वीडियो। वो शॉर्ट टाइम पास वीडियो नहीं है मेरे, बस बना दिया 5 मिनट का, चलो 5000 व्यूज आ जाएंगे, है ना। ना, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है। डे 1 से आपको बता रहा हूं, माई टारगेट इज नॉट टू गेट 5000 और 50,000 व्यूज। माई टारगेट इज नॉट टू गेट 1 million सब्सक्राइबर्स। माई टारगेट इज टू help you get a job, help you to get a job, assist you get a job। इतना ही मेरा टारगेट है, और मैं उसी टारगेट पे काम करता हूं, राइट। मेरा टारगेट करोड़पति बनना नहीं है, ऊपर वाले ने बहुत दे दिया है। दाल रोटी चल जाती है ना, बहुत है वो, है ना, दाल रोटी बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये क्लास ऊपर वाले को थैंक यू बोलने के लिए होती है कि जो उसने दिया है वो मैं किसी को दे पा रहा हूं, वो मैं किसी को शेयर कर पा रहा हूं। जो मेरे पास है दे वही तो सकता हूं, जो आपके पास है आप वो दे सकते हो। जिसके पास गाली है वो गाली देता है, जिसके पास पैसे हो पैसे देता है, जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज देता है, जिसके पास दुख है वो दुख देता है, जिसके पास सुख है वो सुख देता है। जो है मेरे पास दे वही सकता हूं ना, जो है ही नहीं वो मैं कहां से दे दूंगा। जो मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, जो है वही दे सकता हूं। और आप उसको लीजिए, कोशिश करिए, ग्रास्प करिए, टाइम दीजिए चीजों को। नौकरी टाइम पास नहीं होती, और टाइम पास हो भी सकती है once you get the job, but until you get the job it's not time pass। प्रिपरेशन कभी सेकेंडरी नहीं हो सकती। सारे काम से फुर्सत मिली तो चलो अब पढ़ लेते हैं, ना, पढ़ने के बाद टाइम मिले तो कुछ और कर लेते हैं, ये है प्रिपरेशन। पढ़ने के बाद जब बोर हो जाए, थक जाए, तो कुछ और कर लेते हैं। यहाँ तो कुछ और करके जब टाइम बचता चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए,
अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, बहुत समझदार हैं आप, बहुत कंपटीशन आपने देखा है, बहुत एमसीक्यू सॉल्व करते हो, किस क्या परफॉर्मेंस है आपकी, यू नो बेटर देन एनीवन एल्स, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपके बारे में, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और अगर मैं अपना पोटेंशियल जानता हूं, मैं अपनी क्षमता जानता हूं, तो मैं ये जानता हूं मैं क्या कर सकता हूं, उतने ही वादे करता हूं जितना मैं कर पाऊं, उसी वीडियो का वादा करता हूं जो आपको दे पाऊं, दे तो सब कुछ सकता हूं, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, पॉजिटिव ऑफ टाइम है, मेरे को वेरियस चीजें वेरियस लेक्चर्स तैयार करने होते हैं, अलग अलग क्लासेस के लिए तैयार करने होते हैं, मेरे सिर्फ आप ही स्टूडेंट्स नहीं है ना, आप तो हैं, मेरी क्लास भी होती है, बीए में होती है, एमए में होती है, आपके साथ होती है, अध्ययन मंत्रा पर भी होती है, तो मुझे सबके लिए अलग अलग लेक्चर प्लान होता है, अलग अलग लेक्चर्स तैयार करने होते हैं, और इसलिए बहुत सारी चीजों से कम वीडियोस दे पाता हूं। फिर वे 2 आवर्स चुराता ही हूं रोज अपने फैमिली से, आपके लिए 2 घंटे आपके लिए लेकर आता हूं, और उस 2 घंटे का बेनिफिट उठा लीजिए जितना आप उठा सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट, ये यूटिलिटारियन फिलॉसफी है। क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े, बहुत सारा लेक्चर दे दिया ना, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो अटेंटिवली। आशा है कि बुरा नहीं लगा होगा, और लगा भी होगा ना तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, शायद बुरा लगा हो तो ही कुछ अच्छा कर डालो, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल पीरियडाइजेशन often has nothing to do with the lifetime of writers. Thus, we see 2 writers born in the same year belonging to the separate periods. अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सर इस बुक में तो दिया है रेनेसांस यहां से शुरू होता है, इस बुक में तो दे दिया है सर विक्टोरियनिज्म तो 1837 से शुरू होता है, आपने तो बताया था 1832 से शुरू होता है ना। ऐसी चीजें दी होती हैं, क्यों दी होती हैं? बिकॉज लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल पीरियडाइजेशन often has nothing to do with the lifetime of writers. Sometimes we see that 2 writers were born in the same year, but they belong to 2 different periods. Why? Because of the characteristics of their writings. Characteristics के वजह से ऐसा होता है ना। रीजन क्या है उसका? Thomas Carlyle and John Keats were born in the same year in 1795, but John Keats is a poet of romantic age and Thomas Carlyle is an essayist of the Victorian period. Both were born in the same age, one belonged to the romantic period and the other belonged to Victorian period. Keats is a romantic and Carlyle a Victorian. 2 facts are given here. One is assertion and another is reasoning. Assertion and reasoning. Now you have to tell the answer. Assertion and reasoning are correct. Assertion is correct. Reasoning is incorrect. Assertion and reason both are incorrect or does not follow from assertion. I always want you to start your YouTube channel for students like us, because if a student take classes from you, then he or she will find the difference among you and others YouTube teachers. चलिए, अगर डिफरेंस है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपके लिए काम आसान होना चाहिए बस। चलो अविनेश कुमार जी, यू आर रियली ग्रेट परसेप्टो, सो चरण स्पर्श। अरे भाई मैं इंसान हूं, इंसान की तरह हूं, इंसान ही रहने भी दो, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, और खुश रहेंगे कब, मस्त रहेंगे कब, जब नौकरी लग जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया ना। इसका आंसर है ए, assertion and reason both are correct, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Who says that passion in Shakespeare
generally displays libertinism but involves morality. Passion is the most important part that Shakespeare possesses. Passion in Shakespeare generally displayed libertinism, but Shakespeare never moves away from reality. There is morality in Shakespearean plays, right? But sometimes it seems that passion displays libertinism, right? Libertinism means sexuality, abusiveness, such type of things, feelings, but it involves morality. Who made this statement? William Hazlitt, Samuel Taylor Coleridge, P.B. Shelley, Thomas De Quincey. Who made this statement? What is the right answer? Right answer to the question: Shelley, Keats the Henny, Shelley, De Quincey, Samuel Taylor, or William Hazlitt. जी फटाफट आंसर बताइए भाई, आज तो आप आधे घंटे वैसे ही लेट हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज के स्टेटमेंट है ये इन द लेक्चर्स ऑन विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इज बी, वी फॉर बॉम्बे। फिल द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। The paragraph is about the 3 plays of William Shakespeare. Fill the appropriate option. The most tremendous effort of Shakespeare as a poet. Which play is the most tremendous effort of a poet? Most tremendous effort of Shakespeare as a poet. And which play is as a philosopher or meditator? And which play is the union of the two? You have to fill 3 options. G milestone on English with Abhay. Very good evening. Just to share the channel first and then start answering. The most tremendous play. Which one is the most tremendous play? Right. All right. But you are not right. Ji Maushmi, Lear is the most tremendous effort. Hamlet is the most philosophical or meditative character, and Othello is the union of the two, or Hamlet is the most tremendous effort, Othello philosopher and meditator, and Lear is the union of two, or Macbeth is the most tremendous effort, Othello as a philosopher or meditator, and Lear is the union of the two, or Hamlet is the most tremendous effort of Shakespeare as a poet, Macbeth as a philosopher or meditator, and Lear as the union of the two. 4 options are given. 4 options are given and you have to click the right answer. Several of you have given the right answer as A. Shakespeare was a well discussed, well described, well edited, well criticized, well admired dramatist. He was admired, he was criticized in all his preceding ages. हर एज में वो क्रिटिसाइज हुए हैं, हर एज में उनका अप्रिसिएशन हुआ है. And in romantic age में there were several critics who either admired or satirized William Shakespeare. Now I am going to show you a few facts and you have to take the screenshot of that fact, or if you have to
write those facts on your notebook and then I will come back to the answer to this question. Read the slide and come to the answer. Samuel Taylor Coleridge declared the play the most tremendous effort of Shakespeare as a poet. Which play we are talking about? We are talking about the play King Lear. And Samuel Taylor Coleridge thinks that the most tremendous effort of Shakespeare as a poet और ये प्ले है King Lear. While P.B. Shelley considered it the most perfect specimen of the dramatic art existing in the world. Which play? King Lear. The most perfect specimen of the dramatic art existing in the world. John Keats, who described the play as the fierce dispute betwixt damnation and impassioned clay, offered King Lear as the best example of intensity with its close relationship with beauty and truth. A close relationship with beauty and truth, ये स्टेटमेंट था जॉन कीट्स का अबाउट द प्ले किंग लियर. दैट इज the excellence of every art. Beauty and truth is the excellence of every art. So John Keats admired the play King Lear. Dissenting voices, however, challenged the supremacy of King Lear. Samuel Taylor Coleridge, P.B. Shelley, and John Keats, they admired King Lear. And then dissenting voices, Mr. Charles Lamb said he judged the play to have nothing in it but what is painful and disgusting, and deemed it essentially impossible to be presented on a stage. स्टेज पर बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं है. मोस्ट अनस्टेजेबल प्ले कहा था किंग लियर को. किसने? चार्ल्स लैम्ब ने. The great Shakespearean scholar A.C. Bradley acknowledged King Lear as Shakespeare's greatest achievement but not his best play. Shakespeare's greatest achievement but not his best play. This was the voice of A.C. Bradley, who wrote a book under the title Shakespearean Tragedy in 1904. These were the voices of Coleridge, Shelley, Keats, Charles Lamb and A.C. Bradley on King Lear. Alright, I hope you would have taken this screenshot. Now you can take, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे. Alright, question is fine, facts are fine. Have you noted down? And if you have noted down, then I'll go back to the question. Fill the answer. Now answer is fine. Lear is the most tremendous effort of Shakespeare. Hamlet as a philosopher or meditator, and Othello is the union of the two, Lear and Hamlet. All right. इतना कैसे याद रखें, बस
जिस दिन ये सोच लिया कि इतना कैसे याद रखे, उस दिन कुछ याद नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज, फिर आपको यहां पर फिलर ही भरना है। विच प्लेज द मोस्ट रैपिड, विच प्लेज द स्लोवेस्ट, एंड which play combines length and rapidity like the hurricane and the whirlpool, absorbing while it advances. Question number 10. Shakespeare plays, the most rapid play is Macbeth. Macbeth is always in a hurry. He kills Duncan in a hurry. He murdered the gods of Duncan in a hurry. He ordered the murderers to kill Banquo and his son Fleance in a hurry. He killed the wife and sons of Macduff in a hurry, and he himself was murdered in a hurry. Right? So this was all about Macbeth. Macbeth is the most rapid, and Hamlet is the man of thought. Hamlet is the man of thinking. He is the most slowest in movement. And then King Lear combines length with rapidity like the hurricane and the whirlpool, absorbing while it advances. Right answer to the question is A. Now everybody has given the right answer. Now I proceed to the next question, that is question number 11. Periphrasis, which is a roundabout way of speech or writing, is also known. Periphrasis is a roundabout way of saying something, and periphrasis is also known as to beat about the bush or to beat around the bush. To beat about the bush or to beat around the bush. This is periphrasis. This is roundabout way of saying, which is the right answer, which is the another name of roundabout way of saying. Right? Question number 11. The roundabout way of saying is circumlocution. Right? Is the circumlocution. Keep on moving here and there, keep on beating the bush, but not to come to the point. This is called circumlocution, and you must remember the office of circumlocution in one of the novels of Charles Dickens. Alright, the right answer is option D. Roundabout way of speech is also known as periphrasis or circumlocution. Question number 12. Verses on the death of Dr. Swift. Dr. Swift was none other than Jonathan Swift, and who wrote the elegy on the death of Dr. Swift. Verses on the death of Dr. Swift किसने लिखा है? Idyll is a type of poem set in very rustic place, pastoral type poem होती है। सर ग्रामर भी कराएं प्लीज। जी स्वाति, सोच रहा हूं ग्रामर भी कराने की, बट अभी सोच ही रहा हूं, देखिए कब तक सोच पाता हूं। मैं अभी हैमलेट हो गया हूं ग्रामर को लेकर के। राइट, मैं अभी हैमलेट हो गया हूं ग्रामर को लेकर के, देखिए कब तक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं। फिलहाल इसका आंसर बता दीजिए। वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। डॉक्टर स्विफ्ट वाज जोनाथन स्विफ्ट, और प्रियंका, अशोक मौर्य, इंद्रजीत, फिरोज, नीरज, आप लोग पूछते हो ना सर आपको कैसे इतना याद रहता है? हमारे बच्चों को देखो कितना याद रहता है, भले ही कभी नाम ना सुने हो, आंसर जरूर सुना होता है, फटाक से आंसर लगाते हैं, और नहीं फटाक से लगा पाते तो बगल में किसी से पूछ लेते होंगे, जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में बैठकर बगल वाले से पूछ रहे होते हैं, और बगल वाला इतना महान होता है ना कि हम अपना वाला आंसर गलत करके उसका वाला कर देते हैं, और बाद में पता चलता है अरे शिट यार सही तो लगाया था गलत कर दिया।
ये दूसरे को देख के लगाने वाले लोग होते हैं, राइट। वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट was an elegy written by Jonathan Swift himself. खुद उन्होंने अपनी डेथ पर एलिजी लिख दी थी। अब सोचिए मरे नहीं तो एलिजी कैसे लिखी, और लिख दी तो क्यों लिख दी जब मरे ही नहीं थे। ये टिपिकल सटायर है 18th सेंचुरी का। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। What is the similarity between these poems? What are the similarities between these poems? Wordsworth's Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's Dawn Zone, and Keats's Hyperion. What are the similarities? They are all elegies. They are all unfinished poems. They are all divided into cantos. They are women-centered poems. जी बिल्कुल, माइलस्टोन, दैट्स गुड। यश, ममता, शाबाश। कविता, ममता, फिरोज, सारिका, सुबोध, श्वेता, अशोक, प्रियंका। ऑल राइट, शाबाश। ऑल आर दीज रोमांटिक पोएम्स। ये भी एक सिमिलैरिटी है, बट दैट इज नॉट इन ऑप्शन। द ऑप्शन में जो है ऑल दीज पोएम्स आर इनकम्प्लीट। ऑल दीज पोएम्स आर इनकम्प्लीट, सो द राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। Come to the next question, that is question number 13. Who said, I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a heathen philosopher at enmity against all true poetry or inspirations? Who made this statement about William Wordsworth? And those who are preparing for TGT, PGT, especially UPPGT, PGT, they must be knowing the answer of this question, because it is about William Wordsworth, and William Wordsworth is in the syllabus of DSSSB. He is in the syllabus of EMRS. He is in the syllabus of your MA examination. He is the syllabus of CUET, and he is in the syllabus of NET, right? He is in the syllabus of HTET. He is in the syllabus of all the examinations. Who said about William Wordsworth? I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man. Natural man rising against the spiritual man continually, and then he is no poet but a heathen philosopher. आ जाएगा आपके पेपर में क्वेश्चन, who is known as a heathen philosopher, या who called William Wordsworth heathen philosopher. इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। heathen philosopher at enmity against all true poetry or inspirations, and these were the comments made by विलियम ब्लेक, राइट। ये विलियम ब्लेक के कमेंट्स हैं ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट ऑप्शन इज सी, राइट। राइट ऑप्शन इज सी। सो माइंड योर आंसर, करेक्ट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, simplest one. Who defined poetry as the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds? Who defined poetry in such glorious terms? किसने पोएट्री को इन ग्लोरियस टर्म्स में डिफाइन किया है? बता दीजिए आंसर। Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.
राइट, सबका आंसर सही है ना? राइट आंसर इज पर्शी विषशाली एंड ऑप्शन इज ए, क्वेश्चन नंबर 16. Who said that if Wordsworth was the poet of nature, Blake was especially the poet of anti-nature? अगर वर्ड्सवर्थ नेचर के पोएट हैं तो एंटी नेचर के पोएट हैं विलियम ब्लैक. और ये किसका स्टेटमेंट था? क्वेश्चन नंबर 16. Who said that if Wordsworth was the poet of nature, Blake was especially the poet of anti-nature? जी कमान, P. B. Shelley, John Keats, G. K. Chesterton or Edmund Burke? Question number 16. Shweta is with D, Noori is with D, Sarika is with D, Avnish Kumar is with B, Feroz is with D, Ajay Mishra B, Neeraj D, Vijay Lakshmi D, Pratima D, Ashok Kumar Maurya C. Right? जी बुशरा यास्मीन, माइलस्टोन, बीके. शाबाश, कमान. धर्मपाल, ममता शुक्ला, प्रियंका शर्मा, सोनू बगोतिया. राइट आंसर, हु सेड दिस, हु मेड this statement, and this statement was made by G.K. Chesterton. G.K. Chesterton wrote the biography of William Blake. William Blake की बायोग्राफी लिखी थी G.K. Chesterton ने, and G.K. Chesterton made this statement: if Wordsworth was the poet of nature, Blake was especially the poet of anti-nature. Right answer is C, G.K. Chesterton. Now, question number 17. Who is of the view that King Lear is the most perfect specimen of the dramatic art existing in the world? I have just told you the answer to the question. Right? एक पूरा पैराग्राफ बताया था, उसी का आंसर है ये, उसी का ये क्वेश्चन है. That is question number 17. Do answer. बताइए आंसर फटाफट. Which is of the view that King Lear is the most perfect specimen of the dramatic art existing in the world? अभी थोड़ी देर पहले आंसर बताया था, है ना? क्लिक कर दीजिए. 17 का आंसर क्या है? जी अपराजिता, अजय, नूरी, गीता कन्नौजिया, कविता, संगीता जी गुड इवनिंग, शाली, स्वाति, बुशरा, पीके, फिरोज, ममता. ममता सी पे तो शैली नहीं है. हाँ, आंसर आपने सही बता दिया है और ऑप्शन गलत भर दिया है. बस आंसर इज पी विशाली, दैट इज बी. क्वेश्चन नंबर 18. On the knocking at the gate in Macbeth. On the knocking at the gate in Macbeth is an essay by Thomas De Quincey. By Thomas De Quincey, published in 1823. Published in 1823 और अक्टूबर इसी महीने में, अक्टूबर 1823 में the essay was published, and the question is published in Edinburgh Review, London Magazine, Examiner or Indicator. All the four were the magazines published in Romantic period. बताइए आंसर. कहां छपा था ये ऐसे? संगीता, अजय, सुबोध, फिरोज, श्वेता, स्वाति, प्रतिमा, नूरी, काजल, कविता, पीके, श्वेता, बीके, श्रुतिका, शशि, प्रॉस, पीके, नीरज, हेमलता, गीता, बीके,
स्वाति, इंग्लिश विद अभय, ममता शुक्ला, गजेंद्र सिंह, संगीता, हो गया जी ममता। दिस एसे was published in लंदन मैगजीन। ये क्वेश्चन तो सबने तैयार कर रखा है ना कि ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, थॉमस डी क्विंसी का एसे है, डील्स विद द पोर्टर सीन दैट अपीयर्स इन मैकबेथ आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। पोर्टर सीन आती है, दो लोग हैं, दे वर नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ and that knocking breaks the silence, right? Silence को break करने का काम करते। Everybody has prepared the question, but nobody prepared that in which magazine it was published. So when you prepare a question, prepare the question in toto, complete information के साथ prepare करिए, क्योंकि literature तो उतना ही है, नेट उतने पर ही होता है। पेपर टफ और इजी कैसे होता है? पेपर इन्हीं पॉइंट्स पर टफ और इजी होता है। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द डिटेल्स, पेपर इज इजी। इफ यू डोंट प्रिपेयर्ड, देन पेपर इज टफ। यही टफ और इजीनेस की डेफिनेशन है। राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज लंदन मैगजीन, एंड लंदन मैगजीन इज इन द ऑप्शन बी, सो क्लिक हियर। राइट, इन लंदन मैगजीन इट वाज पब्लिश्ड इन 1823. Absolutely right. Next question. जी मीरा, London magazine is correct. Who ridicules the notion of poetic return to nature in the romantic age? Right? Rousseau had said, return to nature, and poets of the romantic age return to nature. But there was one who ridiculed the precept, who said that people are advancing and the romantic poets are going towards uncivilization. They are talking about going to the wild, to the forest, right? Forest जाने की बात कर रहे हैं। They are uncivilized people. And who was the person who ridiculed the notion of poetic return to nature in the romantic age? Right? Poetic return to romantic age, poetic return to nature को criticize किसने किया है? Thomas Love Peacock ने। Thomas Love Peacock in his essay Four Ages of Poetry. In his essay Four Ages of Poetry, he criticizes the romantic tradition of poetry and said that romantic poets are going back to the uncivilized world. They are going back to the forest. They are going back to the jungle. They are going back to the nature. They are not advancing. They are not progressive, but they are retrograde poets. ये Thomas Love Peacock का statement था in his essay Four Ages of Poetry, right? And Mr. P.B. Shelley retaliated in his The Defense of Poesy. All right, question number 19th का आंसर है C. Question number 20th पर आते हैं। Who said poetry is the language of imagination and the passion? It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to the human mind. Poetry is the universal language which the heart holds with nature itself. William Hazlitt, William Wordsworth, P.B. Shelley, or Francis Zeffrey, who made this statement about poetry, कि poetry is the language of the imagination. Poetry itself is language. And poetry is the language of whom? Poetry is the language of what? Language of imagination and the passions. It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to the human mind. Poetry is the universal language
which the heart holds with nature and itself. This definition of poetry was given by William Hazlitt. William Hazlitt wrote an essay in general poetry, poetry in general, and that poetry in general was published in a book, right? It was his work, Lectures on the English Poets, right? Lectures on the English Poet पर एक प्रीफेस था और उसी के प्रीफेस के रूप में ये लिखा गया था पूरा पोएट्री इन जनरल, राइट बाय विलियम हैजलिट. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is not the opening line of the well-known romantic poem? Which of the following is not the opening lines of the well-known romantic poems? बताइए आंसर फटाफट. My heart aches and drowsy numbness pains. Hail to thee, blithe spirit. Margaret, are you grieving over golden grow unleaving? The world is too much with us. कौन सी है पोयम जिसकी ओपनिंग लाइन यहां पर नहीं दी है? TDCDCCC. Wow, absolute answer. My heart aches and drowsy numbness pains. This is the opening line of Ode to Nightingale by John Keats. Hail to thee, blithe spirit. This is the opening line of To a Skylark by P.B. Shelley. And Margaret, are you grieving over golden grove unleaving? This is the opening line of Spring and Fall. Spring and Fall by G.M. Hopkins. ये भी opening line है. And the world is too much with us is also the opening line of a sonnet under the same name, right? And which one of the following is not the opening lines of a romantic poem? Romantic poet G.M. Hopkins नहीं थे. G.M. Hopkins, Gerald Manley Hopkins was a Victorian poet. Though all the four options open a line, सब opening lines हैं, बट रोमांटिक कौन सी नहीं है ये क्वेश्चन है, राइट? ये मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रूव अनलिविंग. दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम स्प्रिंग एंड फॉल बाय गेराल्ड मोनली हॉपकिंस, हु वाज अ विक्टोरियन पोएट. All right. Next question, that is question number 22nd. Who says that reason respects the differences and imagination the similitudes of things? If you have rationality, then you will respect differences. But if you have imagination, if you do not have reason, then you will search similarities, similitudes of things. किसका statement था? Who said that reason respects the difference and imagination the similitudes of things? Reason respect करता है differences की and imagination respect करती है similitude की. Who made this statement? G. Question number 22nd. P.B. Shelley, Thomas Peacock, William Hazlitt, or Francis Safri. This statement was given in the essay Defense of Poetry
डिफेंस ऑफ पोएट्री का स्टेटमेंट है ये। एंड हु रोट डिफेंस ऑफ पोएट्री? डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटन बाय P.B. Shelley in 1822, though it was published much later in 1840. Posthumously published हुई थी डिफेंस ऑफ पोएट्री 1840 में, लिखी गई थी 1822 में, but it was published in 1840. All right, next question. Who says that a poem is the very image of life in its eternal truth, the creation of actions according to the unchangeable forms of human nature as existing in the mind of the creator? किसका स्टेटमेंट है ये? आज स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ, राइट, और सारे क्वेश्चंस 2 या 3 टेक्स्ट से ही यहाँ सारे कोटेशंस हैं, दो दे आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस, और इसीलिए मैंने कोशिश की उन सबको कलेक्ट कर देने की। दिस कोटेशन वाज आल्सो टेकन फ्रॉम P.B. Shelley's द डिफेंस ऑफ पोएजी। राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी फॉर डिकॉइट, है ना, डी फॉर डेली। ये भी P.B. Shelley के डिफेंस ऑफ पोएट्री का ही स्टेटमेंट था, राइट। पोएम इज द वेरी इमेज ऑफ लाइफ expressed in its eternal truth. Question number 24. Politics and the English language. Politics and English language is an essay. Politics and English language is an essay by whom? F.R. Lewis, Terry Eagleton, George Orwell, or Raymond Williams? Politics and the English language. Politics and the English language is an essay by ऐड आ रहा था तब से। अरे देखिए, पता नहीं आप लोग कैसे बताते हो कि ऐड आ रहा होता है। मैं कल से आप बताए हो ना, तब से देखिए 2 मोबाइल खोल के बैठा हूं और दोनों में ही क्लास चल रही होती है। नो आज हैज कम येट, टुडे कोई आज नहीं आया है ना। देखिए बिल्कुल बिल्कुल हमारे में क्लियर चल रही है दोनों क्लास विदाउट एनी ऐड। और आ ही जाता है ना तो 5 सेकेंड का होता है, तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाया करिए। इतना लेट कौन इंतजार करता है और कौन देखता है यूट्यूब पे कमेंट्स? तुरंत आप उसको प्रेस करिए, 5 सेकंड्स के बाद स्किप एड्स और आगे बढ़ जाइए, राइट। चलो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? मेरे में ऐड आज तक नहीं आया, देखो सारिका कह रही है ना। ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल की आका एक ऐसे है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। Politics and English language is an essay by whom? By George Orwell, right? George Orwell was a 20th century novelist, right? 20th century novelist थे, क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे, और उन्हीं का वर्क है पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और all issues are political issues, and politics itself is the mass of lies, evasion, folly, hatred and schizophrenia. पॉलिटिक्स के बारे में स्टेटमेंट था, ये सारे इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सारे इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। एंड पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज अ मास ऑफ लाइज, राइट। Politics is a mass of lies, evasion, folly, hatred and schizophrenia. सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। When the general atmosphere is bad, language must suffer. I should expect to find this is a guess which I have not sufficient knowledge to verify that the German, Russian and Italian languages have all deteriorated, सब खराब हुई हैं इन द लास्ट 10 और
15 ईयर्स। लास्ट 10 और 15 ईयर्स कब है? वो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर लैंग्वेज हैज डिटेरियोरेटेड, मींस लैंग्वेज क्या होता है सर? स्किप ऑप्शन भी नहीं आता है, पूरा पूरा देखना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये तो टॉर्चर है भाई। इसे तो हमारे स्टूडेंट से सारे थक करके भाग जाएंगे, है ना। कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया होता यूट्यूब वालों का कि उनसे कुछ बात करी जाए। फिर भी मैं आज कुछ और एक्सपर्ट से पूछता हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक दो को मैं भी जानता हूँ। आज पूछूंगा भाई क्या मामला है ना। ये स्टेटमेंट है उसी ऐसे प्रीवियस वाले का, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, जॉर्ज ऑरवेल का स्टेटमेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग कोटेशन है, एंड इन फैक्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोटेशंस, टू कोटेशन का कॉम्बिनेशन है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी का PYQ है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB then you have to prepare for UGCNET examination. DSSSB means UGCNET, आपको वही प्रिपेयर करना है, and then only you could get through. All right, चलो next question number 26. What among the following is ruled out by Longinus as a way of achieving the sublime? Right, achieving the sublime में एक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ग्रेट थॉट्स, इमॉडरेट इमोशंस, नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट। अकॉर्डिंग टू सब Longinus, we have 5 sources of sublime. Number 1, great thoughts, grandeur of thoughts. Number 2, capacity for strong emotions. Number 3, noble diction, proper use of figure of speech, and then dignified compositions. These are the 5 sources of sublime. Which one is not mentioned by Longinus as a source of sublime? That is immoderate emotion. He talks about emotion. But he talks about capacity for strong emotion. Capacity for strong emotion. He does not talk about immoderate emotion. Capacity for strong emotions की बात करते हैं। राइट, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करते हैं, वो इमॉडरेट की नहीं। सो दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है इमॉडरेट इमोशन इज नॉट द पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सबलिमिटी, थ्योरी ऑफ सबलाइम। बीके सुगंधा कहां सो गई थी? क्वेश्चन का आंसर है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is not fully recognized at home. घर में उनको कोई जानता ही नहीं है। he is not recognized at all abroad. दुनिया में भी कोई नहीं जानता। फिर भी I firmly believe that the poetical performance of his after that of Shakespeare and Milton undoubtedly most considerable in our language. कौन सा वो व्यक्ति है जिसको मैथ्यू अर्नल्ड ने कहां खड़ा किया है? शेक्सपियर, मिल्टन के साथ में। राइट, शेक्सपियर और मिल्टन से तुलना करी है किसकी? यही तो क्वेश्चन है। टू whom does Matthew Arnold refer in the above statement? You ऐसा पर्सन कि he is not fully recognized at home, he is not recognized at all in the world, at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of his after that of Shakespeare and Milton undoubtedly most considerable in all our language. And who was the person referred here by Matthew Arnold? Matthew Arnold and Wordsworth both are in your syllabus. दोनों ही आपके सिलेबस में है।
एंड यस, नजमा, फिरोज, श्वेता, दीपक, हेमलता, सुबोध, अजय मिश्रा, शाबाश, शशि, कविता, पीके, संगीता, बीके, जॉर्ज आरवेल, अरे बीके को पता है, नूरी, सारिका, अपराजिता, अरे आंसर बता दिया तब भी गलत बता रहे हो। मैंने बताया ना कि वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू अर्नल्ड दोनों ही सिलेबस में है, तब आप एडमंड स्पेंसर आंसर लगा रहे हो। ये मैथ्यू अर्नल्ड का स्टेटमेंट है अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। मैथ्यू अर्नल्ड का स्टेटमेंट है अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड मैथ्यू अर्नल्ड says that Wordsworth was equal to Shakespeare and Milton, or Wordsworth comes third after Shakespeare and Milton. This was the statement made by Matthew Arnold, and according to Matthew Arnold, right, Wordsworth, right, the poetical performance of Wordsworth after that of Shakespeare and Milton undoubtedly most considerable in our language. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, 27 का सी, देन 28। सबको आंसर पता है, ये आपके लिए कॉमिक रिलीफ है ना, इट इज जस्ट लाइक अ कॉमिक रिलीफ। पढ़िए और आंसर कर दीजिए। Which romantic poet coined the famous phrase spots of time? Spots of time किसका फ्रेज है? Everybody knows the answer. थक तो नहीं गए हो ना? आज क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल से आ रहे हैं तो बोर हो गए मन कर रहा होगा चैनल छोड़ के चले जाए, है ना? कोई नहीं, जब बोर होने लगो ना तो एक बार फिर चैनल शेयर कर दिया करो, कुछ और लोग जुड़ जाएंगे, आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे, है ना। ये सब लर्निंग फेज है, क्वेश्चन है सीखने का, समझने का, क्वेश्चंस बड़े, क्वेश्चंस छोटे, हर टाइप के क्वेश्चंस करने का तजुर्बा होना चाहिए, और तजुर्बा, वो नॉलेज, ज्ञान अचीव करते रहिए, थोड़ा मुश्किल ही सही, और मुश्किल से ही निकलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। आ जाओ भाई। सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, फटाफट कर लो। नहीं थके हो? नहीं थके हो तो चलो देखते हैं कितने लोग लाइक किए चैनल और कितने लाइव हो, कितने लाइव और कितने लाइक्स बताइए फटाफट। 36 are live at present and only 17 have liked. 17 ने लाइक बटन प्रेस किया है एंड 37 आर लाइव। चलो कोई बात नहीं, लाइक करिए ना लाइक करिए, सीखते जरूर रहिए बस। आंसर इसका भी क्लियर है ना? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बायोग्राफिया लिटरेरिया का टर्म है कॉलरिज का। क्वेश्चन नंबर 30, द ग्लोब थिएटर ओपन्ड इन, ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? द ग्लोब थिएटर ओपन्ड इन, बोलिए फटाफट।
मैं तो मंदिर की घंटी बजाकर ही इस क्या लिखियो इस कक्षा में आते हैं। अच्छा जी, ठीक है फिर। हनुमान जी कहते हैं कि अब जाओ ना क्लास में। वेरी नाइस। द ग्लोब थिएटर वॉज ओपन्ड इन 1599। सबने करेक्ट आंसर दिया है। ग्लोब थिएटर वॉज ओपन इन 1599. It was burnt in 1613 and it was rebuilt in 1614. राइट, यहां पर जो भी डेट्स दी हैं, यहां पर थिएटर बना था द थिएटर, यहां पर बनता है ग्लोब, यहां पर काट फायर, ग्लोब में लगती है आग, और यहां पर रीबिल्ट होता है ग्लोब। ऑल द डेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31st, which of the following poets was not one of the favorites of जॉन कीट्स? जॉन कीट्स का फेवरेट पोएट कौन नहीं था? एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और क्रिस्टोफर मार्लो। Oh, thank you so much, Hemleta. Who was not the favorite poet of John Keats? John Keats was very much interested in Renaissance literature, and even he started his career with the translation, Homer's translation by Chapman. Chapman had translated Homer. Chapman is known as Homer's translator. ना उससे शुरू किया था. And John Keats wrote many poems in imitation of Spenser's stanza form, Spensidian stanza. And for Shakespeare, he coined the phrase negative capability and said that Shakespeare possessed it a lot, but he never talks about Christopher Marlowe. And Christopher Marlowe was not Keats's favorite poet. So right answer is B, not C. Right answer is B. He was inspired by Spenser, but he never talked about the poet, the playwright Christopher Marlowe. Right answer is B. Question number 32nd. John Keats coined the phrase negative capability in कब coin किया था? 1815 में, 1817, 1818 or 1819 when he coined the term negative capability. बताइए आंसर फटाफट. क्वेश्चन नंबर 32nd. जी बुशरा, बी. प्रतिमा, संगीता शर्मा, नेहा, प्रियंका, भावना, हेमलता. शाबाश, कमान. He coined the phrase negative capability to admire William Shakespeare. To admire William Shakespeare. And when did he coin the phrase? In 1800. जी कविता, दीपक, पीके, सुगंधा, सारिका, अशोक, गीता, बीके, अपराजिता. He coined the phrase in 1817. Option B is the right answer. Nasma is the incorrect here. Right, as well as Meera Sagar. Right, the phrase was coined by John Keats in 1817. ये factual question है, not the conceptual. Shakespeare was the only lonely and perfectly happy creature. Only lonely and perfectly happy creature whom God ever formed. He could never have made a being more unmatchable. और किसी को नहीं बना सकता था ऐसा इतना अनमैचेबल आदमी, इतना अनमैचेबल, इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड. वो कौन था? अनमैचेबल, वो था शेक्सपियर.
only lonely and perfectly happy creature God has ever formed. Who made this statement about William Shakespeare? P.B. Shelley, John Milton, John Abraham, or John Keats? Who made this statement? G. Subodh Kumar, 33rd. दिमाग में जंग लग गया था, अब थोड़ा काम करने लगा है। वाह, पहले बताए होते यार, जंग की भी दवा है हमारे पास, है ना। और ये जंग हटाने की ही क्लास होती है जिसपे आप लोग आते रहते हो, जाते रहते हो, हाँ, क्विट करते रहते हो, जुड़ते रहते हो, है ना। जब क्लास एंड होती है ना तो फिर मैं देखता हूं 250 व्यूज, 240 व्यूज, 220 व्यूज, बट जब एक साथ लाइव होने को दिखता है ना तो कभी लिखता है 54 लाइव, 38 लाइव, 60 लाइव, इस टाइप से आता है। मतलब पीपल कम एंड गो, जैसे कि प्रूफ्रॉग देखता है कि वीमेन कम एंड गो, टाइकिंग ऑफ माइकलएंजेलो, फ्लक्चुएट होता रहता है। वैसे आपका आना जाना भी फ्लक्चुएट ही होता रहता है। कुछ ही है जो सीरियसली और दे आर अराउंड 40 to 50, दे आर कंसिस्टेंट, and consistency is the first formula of success. This statement was given by John Keats. 33rd का आंसर है C. Shakespeare is the only lonely and perfectly happy creature ever created whom God ever formed. He could never have made a being more unmatchable. Right answer is C. Now I come to the question number 34. In three things of John Milton, Keats was particularly interested. जॉन मिल्टन के तीन चीजों में इंटरेस्टेड है जॉन कीट्स. Find the odd one out. The immensity of Milton's undertaking, his method of contrast, his excellent use of blank verse, or his use of sensuous language. तीन में तो इंटरेस्टेड है, एक में नहीं. वो एक कौन सा है? जी मनीषा यादव, गुड इवनिंग, कैसी हैं? कहाँ थी अभी तक, इतना लेट? चलो आंसर भी लगे हाथ, बताते रहो कि ये which are the three qualities that influenced John Keats. राइट, जॉन कीट्स को जिसने इन्फ्लुएंस किया है, कौन सी नहीं है. 34th का आंसर क्या है? अजय मिश्रा कह रहे हैं ए और सुबोध कह रहे हैं डी, मीरा सागर का सी, बुशरा का ए, प्रतिमा का डी, गीता का बी, अशोक का डी, सारिका का डी, नीरज का बी, अपराजिता का डी. शाबाश, कमान कमान. अरे अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं भाई, जितने भी लाइव है फटाफट आंसर करते रहिए. आंसर पे तो बिल्कुल रुकिए नहीं, बताते रहिए फटाफट. जी कविता, फिरोज, संगीता, अपराजिता, नीरज, सारिका, प्रियंका, मीरा, नजमा. वाओ, ग्रेट ग्रेट, ग्रेटर, greatest. Right answer to the question is Milton. The immensity of Milton's undertaking, method of contrast, and use of sensual language. He was not interested in excellent use of blank verse, because nobody could use excellent blank verse better than William Shakespeare. So the right answer here is C. Right answer C है यहां पर. Right? खाना बना रहे थे, चलो कोई नहीं, ये टाइम ही ऐसा है. आप लोग को क्या लगता है, टाइम सही है या टाइम बदल देना चाहिए हमको? Whether we should change the time or this time is appropriate. ये तो टाइम बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के मैंने अपने आप से शुरू कर दिया था 8:30 का. राइट, 8:30 का इसलिए कि अराउंड 2 आवर्स तो लगेंगे, तो 10:30 तक वी विल बी फ्री. आज थोड़ा सा लेट हुआ है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज. तो इफ यू आर ready then I can continue, but if time is over
then I shall stop here. इस पर बता दीजिए, how many of you wants to continue? कितने लोगों के सोने का टाइम हो गया है? बंद करें आज अब, एनफ? टाइम ओके, चलो सही है, चलिए ठीक है, फिर तो मेरी चॉइस आप लोग को पसंद है। खाना 8 बजे बना लेते हैं, ये तो तरीका बिल्कुल सही है। हाँ ये भी सही है कविता, बिल्कुल। चेंज द टाइम 8:30 PM, ठीक है। ये क्या है मैडम? बीके क्या बताना चाह रही हो? 8 o'clock will be much better, okay, continue सर जी। शाहिबा तरन्नुम, कोई नहीं मनीषा, इट्स ओके बेटा, एज पर योर विश आई एम विद यू। थैंक यू सो मच लकी। पता है लकी का नाम लकी नहीं है, बट लकी सिर्फ यूट्यूब पे लकी है, रियल नेम तो हमको पता है। कंटिन्यू करें? बीके सुगंधा का टाइम हो गया है ना, बट मेजॉरिटी कह रही है कि कंटिन्यू करिए। चलो फटाफट आंसर कर लेते हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट। 35th ऑफ हिज कंटेम्पररीज कीट्स मोस्ट एडमायर्ड। कीट्स सबसे ज्यादा किसको एडमायर किए हैं अपने कंटेम्पररीज में? ऑफ हिज कंटेम्पररीज कीट्स मोस्ट एडमायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, दो ही क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज वेल। क्रिटिसाइज भी उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को किया है ना। इगोटिस्टिकल सब्लाइम द फ्रेज John Keats coined to criticize William Wordsworth, and William Hazlitt was appreciated by him. Wordsworth and Hazlitt both were appreciated by him, and only one option contains Wordsworth and Hazlitt. So right answer to the question is A, not D. 35th का आंसर है A, right। नेक्स्ट पर चलते हैं, 36th। Poetry should be great and unobtrusive, a thing which enters into one's soul. What should be a poetry? Poetry should be great and unobtrusive, and a thing which enters into one's soul, not one's mind. Right? That enters into one's soul. He doesn't talk about one's mind. And does not startle it or amaze it with itself, but with its subject. Subject से इसको amaze करना चाहिए, ना कि इसकी स्टाइल से amaze करना चाहिए। Who was the poet who made this remark? Shelley, Keats, Wordsworth, or William Hazlitt? Once again, question from the Romantics, and it was who? Question number 36. जी, ममता, अजय, श्वेता, अशोक, मीरा, right? Question number 36. Right answer to the question is John Keats. John Keats said that poetry should be great and unobtrusive, right? A thing which enters into one's soul and does not startle it or amaze it with itself, बट विद द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट से स्टार्टल करे, जो हमको सब्जेक्ट से सरप्राइज करे, वो पोएट्री होनी चाहिए। राइट आंसर इज बी। द स्टेटमेंट वाज मेड बाय जॉन कीट्स, राइट। जॉन कीट्स रोट द स्टेटमेंट इन अ लेटर टू हिज ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेटर कीट्स डिफाइंड इमेजिनेशन? कीट्स किस लेटर में डिफाइन करते हैं इमेजिनेशन को? राइट, कीट्स रोट अ लेटर ऑन 8th October 1817. 8th October 1817 में he wrote a letter, and in that letter
he defined imagination. And to whom did he write the letter? Letter to Woodhouse, letter to George, letter to Thomas, letter to Benjamin Bailey. Right, letter to Benjamin Bailey. John Keats is prescribed in UPPGT syllabus. So the UPPGT students must be knowing the answer, and if they don't know the answer, then no worries. Just write the question in your notebook. Next time you will give the right answer. Right, the statement was made by John Keats. Right, our imagination was defined by John Keats in a letter to Benjamin Bailey. Right, in a letter to Benjamin Bailey, and that letter was written on 8th October 1817. Today is 6th October, 8th October आने वाला है, उसी दिन लेटर लिखा जाएगा. Right, next question, that is question number 38. Who is associated with the mention of many apartments? For the explanation to this question, आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा जॉन कीट्स पर, आपके जो चैनल पर पड़ा हुआ है. राइट आंसर जॉन कीट्स है. सो आप यहां पे टिक कर लीजिए. हम आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39th. Who wrote the second preface to Endymion? Right, Endymion has two prefaces, and John Keats was a poet as well as a critic. And John Keats himself was a poet. He criticized his own poetry. अपनी ही पोएट्री को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं जॉन कीट्स. And John Keats said about his poem Endymion that it was a feverish attempt. It was a feverish attempt, a deed that was unaccomplished. Right, काम पूरा नहीं कर पाए थे जो करना चाहते थे. Right, आंसर क्या है? Who wrote the second preface to Endymion? Keats himself, Leigh Hunt, Lord Byron, और पी शैले. जी, संगीता, अपराजिता, दीपक, नजमा, सारिका, पीके, कविता. मनीषा सर आफ्टरनून में क्लास को देख करके नोट्स बनाते हैं. दैट्स ग्रेट मनीषा. शशि दुबे, दीपक कुमार, प्रियंका शर्मा. राइट, श्वेता त्रिपाठी. The two prefaces of Endymion were written by John Keats himself. Keats ने दोनों ही प्रीफेस लिखा था. पहला प्रीफेस where it was published for the first time. Second प्रीफेस लिखा था when he confessed that he was at mistake in writing the poem Endymion. And Endymion was dedicated to whom? Endymion was dedicated to Thomas Chatterton. All right, क्वेश्चन का आंसर जो है डी है. डी फॉर डेली. And now proceed to the next question. That is question number 40. Just I told you the answer. For which poem Keats said that it was a feverish attempt rather than a deed accomplished. A feverish attempt rather than a deed accomplished. ये किसने कहा था? Right, किस poem के लिए कहा था Keats ने? For which poem did Keats say it was a feverish attempt rather than a deed accomplished? Lamia, Chatterton are the ugcnetenglishliterature, Isabella are the part of Basil, or Endymion. For which poem he said that it was a feverish attempt rather than a deed accomplished? बिल्कुल रटा रटाया PYQ है. Several times कई एग्जाम में पूछा गया है. So you know the answer. Right answer is Endymion. And Endymion was dedicated to Thomas Chatterton. All right. Who said that writer of Endymion's mind was like a pack of scattered cards? Writer of Endymion's mind was like a pack of scattered cards. Keats referred to himself, Francis Zeffirey, Leigh Hunt, or London Magazine. Who made the statement? The writer of Endymion's mind was like a pack of scattered cards. ताश के पत्ते और बिखरे हुए थे जब उसने लिखा
किसको? एंडीमियन को। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है जी? अजय, वन आंसर हैज कम। Yeah, Shweta is with question mark. As I told you, Keats was his own critic. Keats खुद के ही क्रिटिक हैं, और जब वो खुद के ही क्रिटिक हैं, उन्होंने अपने को ही रेफर किया है as the writer of Endymion's mind was like a pack of scattered cards. His poem Endymion was highly criticized by Francis Jeffrey and others. Francis Jeffrey and others ने खूब criticize किया था, and then Keats confessed that his poem was a feverish attempt rather than a deed accomplished. And किसमें लिखा था इन्होंने इस चीज को कि the writer of Endymion's mind was like a pack of scattered cards in a letter to P.B. Shelley. In a letter to P.B. Shelley. All right. Next question. 42nd. Which of the following poems is described as too smokable? कौन सी पोएम है जिसको टू स्मोकेबल डिस्क्राइब किया जाता है? हाँ, इजाबेला, लामिया, ओड टू साइकी और ओड टू नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 42 जी ममता, विच पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज टू स्मोकेबल? जिंदगी धुआं धुआं और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, है ना? कौन सी पोएम है जो टू स्मोकेबल कही जाती है? शैली की पोएम है? नहीं, ये तो सारी कीट्स की पोएम है जी। कविता, सारिका, नीरज, पीके, अजय, संगीता, फिरोज, सारिका जी। कम ऑन, विच पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज टू स्मोकेबल? जी आदू, the little choreographer has come back again. मीरा सागर, संगीता, हेमलता, प्रियंका, नजमा, शाबाश। Answer to the question is A. Isabella or the Porta Basil. Isabella or the Porta Basil को कहते हैं it is too smokable. और इसी पोएम के लिए when he was asked कि this poem is not fit for female readership, and then he said I haven't written this poem for female. मैंने ये पोएम महिलाओं के लिए नहीं लिखा है, यही पोएम है। टू स्मोकेबल किसने कहा था? कीट्स ने ही कहा था। इजाबेला और द पार्ट ऑफ बासिल को क्या कहा था? इजाबेला और द पार्ट ऑफ बासिल को कहा था इट इज टू स्मोकेबल। जी सर धुन के पक्के हैं? अच्छा सर धुन के पक्के हैं ना, कि तुम धुन के पक्की हो? बस जो ठान लिया है ठान लिया है, बस एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं अपने बाप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट था तो है। चलो, about which poem Keats said that he did not write it for ladies? Just I told you the answer and the question is here. Isabella, Pot of Basil, Ode to Nightingale, EU of St. Agnes or the EU of St. Mark? आंसर इसका बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी बताना नहीं है ना। चलो प्रोसीड करें। The answer to the question is Isabella. Isabella was the poem for which he said that he did not write this poem for ladies because it is too smokable. Right? Question number 44. Who said Chatterton's language is entirely northern? ये Thomas Chatterton है, to whom Keats dedicated his Endymion and on whom Coleridge wrote a monody, and Thomas Chatterton was described as a marvelous boy by William Wordsworth. T. Who is Tokyo Pitbull? I am here in India.
आप में लाइव क्यों नहीं आते? व्हाट डू यू मीन? आप ऐप में लाइव क्यों नहीं आते? किस ऐप की बात कर रहे हो? टोक्यो पिटबुल, प्लीज लेट मी नो योर नेम. Write the answer. I prefer the native music of it to Milton's cut by feet. I have but lately stood on my guard against Milton. And this statement was made by whom? Made by John Keats on Chatterton. Right, this statement was made by John Keats on Chatterton. Chatterton's language is entirely northern, and you know that Thomas Chatterton was very prideful and he died at the very young age. बहुत कम एज पर उसकी डेथ भी हो गई थी. राइट, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर गए थे वो. राइट, थॉमस चैटरटन. एंड Keats was the worshipper of Thomas Chatterton. He says that Chatterton's language is entirely northern, and I prefer the native music of it to Milton's cut by feet. I have but lately stood on my guard against Milton. Who coined the concept of the chameleon poet? Chameleon poet के बारे में आप सबको पता है. किसका concept है chameleon poet का? Chameleon poet कौन होता है? According to Keats, a poet should be what? A poet should be like a chameleon. Chameleon कौन होता है? One who keeps on changing his personality. Right, poetry is not the turning loose of emotion, but an escape from emotion. Right, that is the advancement of Keats's theory of negativity, the chameleon poet. Poet has no fixed identity. पोएट की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है. ये कीट्स का स्टेटमेंट है. एंड कीट्स टॉक अबाउट द कैमिलियन पोएट. राइट, कीट्स कैमिलियन पोएट की बात करते हैं. राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी फॉर डॉग, डी फॉर डाबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. Who talks about the two uses of language? ये भी आप जानते हो. हाँ जी, टोक्यो कल तो नहीं, मंडे से क्लास आपकी होपफुली कंटिन्यू हो जाएगी, है ना. मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी. डोंट पैनिक. सबके लिए ये मेरा वो है कि बस संडे का और वेट कर लो. Who talks about the two uses of language? Emotive use of language and साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज. इमोटिव और साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज के लिए कौन जाना जाता है? हु सेड दैट देयर शुड बी टू यूसेस ऑफ लैंग्वेज. टू यूसेस ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए. पी विशाली, जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट और आई.ए. रिचर्ड्स. जी, सुबोध का डी, मनीषा का बी, निरंकार का डी, अजय मिश्रा का बी, बुशरा का डी, सारिका का डी. श्वेता is a bit confused but she would have ticked option D. G. Adu the choreographer, I.A. Richards, Subodh D, Kavita D, Bhavna D, Shashi D, Mamta D, P.K. D, Neeraj A, Meera A, Firoz A. Who talked about, who said that the language could be used in two ways: scientific use of language and emotive use of language. And this concept was propounded by I.A. Richards in his book The Principles of Literary Criticism. The Principles of Literary Criticism is a book by I.A. Richards, and in that book only he propounded the theory of two uses of language: scientific use of language and emotive use of language. Alright, answer is D. I.A. Richards. Right? Question number 47.
talks about the literature of knowledge and literature of power? लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर के लिए कौन जाना जाता है? हाँ, ये सबका सही होने वाला क्वेश्चन है। लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। थॉमस डिक्वेंसी, थॉमस पिकॉक, जेम्स थॉमसन, I.A. Richards. Sir, please mention the year also with each work. It will help us a lot. अरे नजमा जी, कुछ खुद से भी किया करो। हाँ, कुछ खुद से भी किया करो। आपने कह दिया तो ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से, बट कुछ अपने लिए भी रखो, कुछ काम आपको भी करना है ना। Who talks about two types of literature? Literature of knowledge and literature of power. Right, it is Thomas De Quincey. Manisha, your answer is not correct. Right, Manisha, Sangeeta, हेमलिता, right, इनके आंसर्स इनकरेक्ट हैं, बाकी सबके आंसर सही हैं। लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर। लिटरेचर ऑफ नॉलेज क्या है? दैट इंस्ट्रक्ट्स, दैट लेट्स यू नो द फैक्ट्स। और लिटरेचर ऑफ पावर क्या है? लिटरेचर ऑफ पावर हैज द पावर टू मूव यू, एंड मिल्टन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिटरेचर ऑफ पावर। और लिटरेचर ऑफ नॉलेज का बेस्ट एग्जांपल कौन है? Who is the best example of literature of knowledge? कौन बताएगा? ये है क्वेश्चन, अभी आएगा, फिलहाल तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 48। Letters to a young man whose education has been neglected was published in. This is the PYQ of UGC. UGC का क्वेश्चन है। बहुत थक गए हैं, बहुत बोर हो रहे हैं ना, फटाफट ये ऐसे है 48 क्वेश्चन। लेटर्स टू द यंग मैन whose education was neglected. This was the essay by whom? By Thomas De Quincey. Thomas De Quincey का essay है, and the essay was published in London magazine. Right, essay was published in London magazine, not in quarterly. Answer is C. Question number 49th. Aja bhai. On the knocking at the gate of Macbeth. This question was once asked. Answer bata dijiye ab. I have very high fever, but classes छोड़ने का भी दिल नहीं करता. Bhavna, just bear with me 2 more minutes. Just 2 minutes आपका हम और लेंगे, बस क्लास वाइंड अप. दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. Second last question and get well soon, Bhavna. On the knocking at the gate in Macbeth was published in London magazine. London magazine में publish हुआ था, and in which year? The year was 1823. The year was 1823. Right answer is B. And then this is the last question. Last but not the least. Thank you so much for bearing with me. Thank you so much for paying your attention. Thank you so much for loving me. Thank you so much for liking and sharing the channel. कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर 8:30 बजे. तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा. आप बाहुबली हैं, आयरन मैन. वाओ, ग्रेट. थैंक यू सो मच. According to De Quincey, the example of literature of knowledge is John Milton. Right? John Milton का एग्जाम, सॉरी जॉन मिल्टन जो है ना, ये लिटरेचर ऑफ नॉलेज नहीं, ये लिटरेचर ऑफ पावर वाले हैं. और जो क्वेश्चन पूछ रहा है लिटरेचर ऑफ नॉलेज का एग्जाम्पल, वो नॉलेज का एग्जाम्पल है द प्रिंसिपी ऑफ सर आइजैक न्यूटन. द राइट ऑप्शन जो है इट इज सी. सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. कल की क्लास अपने राइट टाइम 8:30 पर शुरू होगी, ना कि 9 o'clock पर. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. गुड लक आप सभी को. मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल पर. गुड लक. Thank you so much for watching the channel, sharing the channel and liking the channel. Jai Hind, Jai Bharat. Good night.